Hello everyone, welcome to our YouTube platform Concept and Fact of Life Sciences. Today in this video we are going to discuss about the next part of cellular respiration, that is the Krebs cycle. In our previous video we have discussed about the glycolysis, and in the process of glycolysis there is a conversion of a glucose into the two molecules of pyruvate. And if the conditions are aerobic, then under these conditions the pyruvate, it will enter into the cell organelle which is called as mitochondria, and within the mitochondria there is another cycle which also generates the energy from the molecules of pyruvate, and the cycle is known as the Krebs cycle, जिसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं. तो कंडीशंस एरोबिक होनी चाहिए. Before talking about the Krebs cycle, there is a step which is called as linkage step. This linkage step, it is neither the part of glycolysis nor it is the part of Krebs cycle. It links the two cycles, that is the glycolysis and Krebs cycle. So during this linkage step, we are having the pyruvate due to the glycolysis in cytoplasm. So we are having the pyruvate in cytoplasm, and we have to transfer this pyruvate into the mitochondria for further process or for Krebs cycle. So to transport this pyruvate from cytoplasm to the mitochondrial matrix, it is representing the mitochondrial matrix, and this blue line, it is representing the mitochondrial membrane or inner membrane. So we have to transport this pyruvate into the mitochondrial matrix. For this, we are having a transporter. As we all know that mitochondria is a double membranous organelle, and the outer membrane, it is not a permeable barrier, but the inner membrane, it is a permeable barrier. So we have to have some transporter onto the membrane which can transport the polar molecule across the inner mitochondrial membrane. So here the transporter, it is a symporter. Symporter means it is transporting the two molecules in a similar direction. Another mode of transportation, they are antipode, unipode, जिसके बारे में अपन सेल बायोलॉजी के अंदर डिस्कशन करेंगे. बट यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर या प्रोटीन जो प्रेजेंट है inner mitochondrial membrane पे to transport the pyruvate, it is a symporter, that is a pyruvate H plus ion symporter, which are utilizing the concentrational gradient of protons to transport the pyruvate into the mitochondrial matrix. So we are having the pyruvate in the mitochondrial matrix. So within the mitochondrial matrix, there is a conversion of this pyruvate into the acetyl coenzyme A. Now the final product or the last product of glycolysis, it is the pyruvate, and the start product of Krebs cycle, it is acetyl coenzyme A. So there is a step which is called as linkage step, which converts the end product of glycolysis into the start product of Krebs cycle, and the step is called as linkage step. And here there is a presence of an important enzyme which is called as pyruvate dehydrogenase enzyme complex. Why it is a complex? Because it will carry out the three important reactions, that is the pyruvate dehydrogenase, dihydrolipomide dehydrogenase activity, and dihydrolipomide acetyl transferase activity. बात करते हैं किस तरीके से जो पायरुवेट है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम pyruvate dehydrogenase complex. So first of all, there is a conversion of pyruvate. As we all know that pyruvate is a 3-carbon molecule. So it is having the 3 carbon, it is a pyruvic acid. So first of all, there is a conversion of this pyruvate into an intermediate which is called as hydroxyethyl TPP. During this conversion, there is a addition of TPP. TPP, it is a thymine pyrophosphate. The enzyme pyruvate dehydrogenase complex, it requires 5 cofactors. It is important.
इट रिक्वायर्स 5 कोफैक्टर जिसके बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं. Generally, these are the non-proteinaceous part of enzyme, which is essential for the enzymatic activity of that particular enzyme. So this particular enzyme, it requires 5 cofactor, and the first cofactor, it is the TPP, that is thymine pyrophosphate. It is basically a vitamin B1. First of all, there is the activity of pyruvate dehydrogenase, which converts the pyruvate into the hydroxyethyl TPP. During this, there is a removal of a carbon in the form of carbon dioxide, and there is an addition of thymine pyrophosphate that lead to the formation of hydroxyethyl TPP. सिंपली जो आपका टीपीपी है वो पायरुविक एसिड पे जोड़ दिया गया है, दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए हाइड्रोक्सी इथाइल. क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया है इसलिए 2 कार्बन ही बचे हैं, इसलिए हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी का फॉर्मेशन हो गया. नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर हैविंग अनदर एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड एज डाइहाइड्रोलिपोमाइड एसिटाइल ट्रांसफरेज. वी आर हैविंग द लिपोमाइड ओवर हियर. It is having 2 sulfur group which are under this condition. These are oxidized condition. These are under oxidized condition. So there is a addition of lipomide onto the hydroxyethyl TPP. There is a removal of this TPP and simply the addition of lipomide that lead to the formation of acetyl lipomide. जो आपका हाइड्रोक्सीइथाइल था, सिंपली उसके ऊपर लिपोमाइड को ऐड कर दिया गया, दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए एसिटाइल लिपोमाइड. इन नेक्स्ट स्टेप देयर इज ए एडिशन ऑफ coenzyme A over here and there is a removal of lipomide that lead to the formation of acetyl coenzyme A. Simply acetyl ग्रुप को यहां से हटा करके लिपोमाइड से coenzyme A पे ऐड कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या बन गया, acetyl coenzyme A का फॉर्मेशन हो गया. So this activity it lead to the formation of end product of linkage step that is called as the acetyl coenzyme A. Now the first cofactor was TPP. The second cofactor, it is the, we can write over here, it is the first cofactor lipomide. It is the second cofactor which is required by the enzyme pyruvate dehydrogenase complex. The third one here, it is the coenzyme A. Now the fourth one, it is the FAD. कहां काम आएगा FAD, बात कर लेते हैं. यहां पे अपन ने कहा कि लिपोमाइड जो है वो ऑक्सीडाइज स्टेट के अंदर है, बट जब रिमूव हुआ तो ये अब रिड्यूस स्टेट के अंदर आ गया. नेक्स्ट राउंड ऑफ साइकिल के लिए वापस इसको ऑक्सीडाइज्ड होना है, सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस बैक इनटू इट्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. And for this, there is a conversion of one FAD into the FADH₂. During this, there is a activity of enzyme dihydrolipomide dehydrogenase. तो 3 एक्टिविटीज ये कॉम्प्लेक्स रखता है, तीनों के बारे में अपन ने बात की. तो यहां पे वापस से इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन लीव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिसीव कौन करेगा, FAD रिसीव करेगा और ये रिड्यूस हो जाएगा FADH₂ में. जब ये फिर से ऑक्सीडाइज्ड होगा, देन वी हैव टू रिड्यूस अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड दैट इज द NAD, and the NAD will get reduced into the NADH₂ that we are getting over here. So simply, due to the activity of pyruvate dehydrogenase enzyme complex, there is a conversion of pyruvate into the acetyl coenzyme A, and during this there is a production of one NADH₂ molecule, जिसको अपन बात करेंगे कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर ही ऑपरेटिव रहती है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन. These NADH₂, they can give their electron to the complex 1 of electron transportation chain, and the electron transportation chain, they will convert this NADH₂ into 3 ATP molecule. So simply there is a conversion of energy currency from NADH₂ to
द ATP और एक NADH2 मॉलिक्यूल से अपने को 3 ATP इक्विवेलेंट एनर्जी रिसीव होती है। इसके बारे में अपन बात करेंगे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन की बात करेंगे। नेक्स्ट अब आते हैं, बात करते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। अभी तक अपन ने बात की लिंकेज स्टेप के बारे में, जो लिंक कर रहा था ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से। क्रेब्स साइकिल से आपको स्टार्ट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या चाहिए, एसिटाइल कोएंजाइम A चाहिए, और वो बन रहा है एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज से, एंड दिस स्टेप इट इज कॉल्ड एज द लिंकेज स्टेप। लिंकेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ना तो ये पार्ट है ग्लाइकोलिसिस का, ना ही ये पार्ट है क्रेब्स साइकिल। सो वी आर हैविंग the acetyl coenzyme A within the mitochondrial matrix. Now, as we already discussed about the beta oxidation, और beta oxidation में भी अपन ने बात की कि जो fatty acid है, beta oxidation in case of animal it also takes place in mitochondrial matrix. So we are having the product of beta oxidation, that is the acetyl coenzyme A within the mitochondrial matrix, and the Krebs cycle can also utilize that particular acetyl coenzyme A for the generation of energy or further oxidation process. So वहां से भी जो आपका फैटी एसिड है उसके ब्रेकडाउन से अपन ने कहा कि एंड प्रोडक्ट एसिटाइल कोएंजाइम A ही बनता है, वो भी TCA साइकिल में यूटिलाइज हो सकता है। तो बात करते हैं कि किस तरीके से जो TCA साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडिक साइकिल ऑपरेट होती है विद इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग ए 4 कार्बन molecule that is called as oxaloacetic acid. We are having a 2 carbon molecule which is the product of linkage step, that is the acetyl coenzyme A। pyruvate के decarboxylation से क्या जनरेट हो गया, acetyl coenzyme A का जनरेशन हो गया। So we are having 4 carbon oxaloacetic acid within the mitochondrial matrix. We are having the acetyl coenzyme A which is the product of linkage step. So these 4 and 2 carbon, they will come together and form a first stable product of Krebs cycle, that is called as the citrate in the presence of enzyme citrate synthase. It is a synthase, not a synthetase. यहाँ पे कोई भी ATP का जनरेशन या लॉस नहीं होगा, सिंपली ये 4 + 2 कार्बन को 6 कार्बन स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। Now this citric acid, it is also called as the tricarboxylic acid because this citrate, it is having 3 COOH groups. So it is also known as the tricarboxylic acid. That's why this cycle is also called as the TCA, tricarboxylic acid cycle, because the first stable product, it is a tricarboxylic acid. It is also known as citric acid cycle because the first stable product is citric acid. Now, this citrate, it will convert into its isomeric form, that is called as the isocitrate. The citrate is a 6 carbon molecule and isocitrate, it is also a 6 carbon molecule. It is the isomeric form of citric acid in the 2-step reaction, and the reaction is carried out by the enzyme aconitase. It belongs to the category of lyase, and it will carry out the reaction which is called as isomerization or mutase activity. So simply there is a conversion of citrate into the isocitrate in the presence of enzyme aconitase. First there is a removal of H2O molecule due to the condensation, and then there is an addition of a H2O molecule, that is a hydratase activity. So these are the reaction which is carried out by the class of enzyme which is called as the lyases or the aconitase. Now we are having isocitrate, which is the isomeric form of citric acid. On this isocitrate, there is an activity of another enzyme which is called as isocitrate dehydrogenase. Dehydrogenase, these are the enzyme which belongs to the category of oxidoreductases. So simply there is a removal of a carbon dioxide over here. At the same time, there is a conversion of one NAD molecule into the NADH. Due to the removal of a carbon molecule, the 6 carbon molecule will convert into a 5 carbon molecule. That is the alpha ketoglutarate. And the alpha ketoglutarate, it is the only product
of Krebs cycle, or we can say it is the only 5 carbon product of Krebs cycle. So we are having alpha ketoglutarate over here. On this alpha ketoglutarate, there is an activity of another dehydrogenase which is called as alpha ketoglutarate dehydrogenase. Again, there is a loss of a carbon in the form of carbon dioxide. Similarly, these dehydrogenases, these are the oxidoreductases, lead to the formation of another NADH molecule. At the same time, there is an addition of a coenzyme A that lead to the formation of succinyl coenzyme A. And this succinyl coenzyme A, it is a 4-carbon molecule. Now, in next step, there is an activity of another enzyme which is called as succinyl coenzyme A synthetase. Now, it is not a synthase, it is a synthetase. So, it will convert a GDP molecule into the GTP molecule. At the same time, there is a removal of a coenzyme A. जो coenzyme A यहाँ पे अपने add किया था, it will get removed over here that lead to the formation of a 4-carbon molecule. यहाँ पे कोई डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए पे से कोएंजाइम ए रिमूव हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द सक्सिनेट. नाउ एट दिस स्टेप इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर अपन बात करें प्लांट्स की, तो एट द सेम स्टेप देयर इज अ कन्वर्शन ऑफ 1 ADP in place of GDP into the ATP. So there is a direct synthesization of ATP at this step in case of plants. Now, in next step, the succinate, it will convert into the molecule which is called as fumarate. Fumarate, again, it is a 4-carbon molecule. Now, the enzyme which function over here, it is again a dehydrogenase, but it is a FAD specific dehydrogenase that is known as succinate dehydrogenase. Now, the speciality of this succinate dehydrogenase is that it is the only enzyme of Krebs cycle which remain present on the inner mitochondrial membrane. ये जो एंजाइम है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है. रिमेनिंग ऑल द एंजाइम्स ऑफ Krebs cycle they remain present within the mitochondrial matrix. So केवल और केवल सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज ही जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन होती है उसके कॉम्प्लेक्स 2 से अटैच रहता है, बाकी सारे एंजाइम मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं. तो यहां से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं. एंड ड्यूरिंग दिस डीहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ 1 FADH₂ molecule. Now this fumaric acid, it will further convert into the malate due to the activity of another lyase that is called as the fumarase. So fumarate convert कर देगा fumarate को malic acid या malate के अंदर, and on this malate there is activity of another dehydrogenase. Now this time the dehydrogenase is NAD specific which converts the NAD into the NADH2. And there is a conversion of this malate into the oxaloacetic acid again. Next round के लिए फिर से oxaloacetic acid अवेलेबल है, acetyl coenzyme A पे जोड़ेंगे and then there is a repetition of this particular cycle. So in this way there is a further oxidation of pyruvate which occurs under the aerobic condition in mitochondria through a cycle which is called as TCA or the citric acid or the Krebs cycle. Now, what is the advantage of this cycle? जैसा अपन ने बात की थी ग्लाइकोलिसिस के अंदर, वहां अपन ने कहा कि 6 या 8 ATP का जनरेशन हो सकता है. बट अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका क्या एनर्जी बजट रहता है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. सो अपन देख सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ Krebs cycle वी आर हैविंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ NADH. NADH कहाँ बनता है उसकी बात कर लेते हैं. तो कहाँ बन रहा था NADH? फर्स्ट विद इन द लिंकेज स्टेप देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NADH2. सेकंड in the formation during the formation of or during the conversion of isocitrate into the alpha ketoglutarate there is a production of 1 NADH2. So यहाँ देख सकते हैं पहला जो अपन ने लिया है NADH लिंकेज स्टेप में पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, वहां पे आपको एक NADH मिल जाता है. फिर आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटो
ग्लूट्रेट दैट इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्टिविटी, यहाँ पे भी आपको एक NADH का फॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें, देयर इज ए एंजाइम व्हिच इज अल्फा कीटो glutarate dehydrogenase which converts the alpha keto into the succinyl, there is a production of 1 NADH। और लास्ट जो NADH अपने को मिला था that is at this step, that is a conversion of malate into the oxaloacetic acid। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे there is a production of 1 NADH during the alpha keto glutarate to succinyl coenzyme A production, and there is a production of another NADH during the conversion of malate into the oxaloacetic acid through the activity of malate dehydrogenase। So there is a production of 4 NADH molecule, 1 FADH that produced through the activity of special type of dehydrogenase, that is FAD specific, remain present within the inner mitochondrial membrane, and that is called as succinyl dehydrogenase, and which converts the succinate into the fumarate। During this there is a production of 1 FADH molecule, and we are having the direct production of ATP in case of plant and GTP in case of animals due to the activity of enzyme succinyl coenzyme A synthetase, which converts the succinyl coenzyme A into the succinate। इस दौरान भी अपने को एक ATP या GTP के फॉर्म में एनर्जी मिल जाती है। तो अगर एनर्जी बजट बनाने की कोशिश करें और अपन कहें कि अपने को क्रेब्स साइकिल से कितनी एनर्जी मिलेगी, तो अपन उसके अंदर क्या करेंगे, ये स्टेप इंक्लूड नहीं करेंगे, दैट इज द लिंकेज स्टेप। तो यहां पे अपन देख सकते हैं कितनी NADH है, 1 2 और 3 NADH। सो वी आर गेटिंग 3 NADH, और अपने को पता है कि एक NADH जब अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन को देता है तो उससे अपने को कितनी ATP मिलती है, 3। So we are getting 9 ATP energy। Next we are getting 1 FADH, और FADH की अगर बात करें it will give their electron to the complex 2, और complex 2 को अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो उससे बनेंगी 2 ATP। So we are getting 2 ATPs। Next ATP production डायरेक्ट वी आर गेटिंग 1 ATP मॉलिक्यूल। सो एक ATP अपने को डायरेक्ट मिल जाएगी, ATP और GTP। सो वी आर गेटिंग 1 ATP। सो टोटल अगर बात करें अपन इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस कितनी ATP फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, सो इट विल बी 9 + 2 11 + 1 दैट इज द 12 ATP। अब अगर कहें कि एक पाइरुवेट से कितनी एनर्जी मिलेगी, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा, इस लिंकेज स्टेप को भी ऐड करना पड़ेगा, विच इज ऑल्सो जनरेटिंग 1 NADH एनर्जी। तो 12 + 1 NADH, 1 NADH मीन्स वी आर एडिंग 3 ATP एनर्जी। तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 ATP। तो अगर वन पाइरुवेट से कितनी एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, इट विल बी 15 ATP। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, तो अपन क्या देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ 1 ग्लूकोज इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जो इस प्रोसेस में या जो ग्लूकोज को पाइरुवेट में कन्वर्ट करता है, that process is called as glycolysis, and during the process of glycolysis अपन ने देखा था there is a production of 6 ATP or 8 ATP depending upon the shuttle we are using to transport the NADH into the mitochondrial matrix onto the mitochondrial inner membrane। अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल का यूज कर रहे थे तो अपन ने देखा कि 8 ATP एनर्जी मिल रही थी अपने को, और वहीं अगर अपन ने यूज किया था ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज शटल, उस केस में अपने को मिली थी 6 ATP energy। So depending upon the shuttle we are using, we are getting 6 or 8 ATP from the process of glycolysis which converts the glucose into the 2 pyruvate। और फिर एक पाइरुवेट से कितनी ATP मिल रही है, 15 ATP। तो दो पाइरुवेट से कितनी मिलेगी, तो 2 पाइरुवेट से अगर इसको अपन
मल्टीप्लाई करें, इंटू 2 करें इसको, तो क्या हो जाएगा ये, इट विल बी 30 एटीपी। अपन निकालने की कोशिश कर रहे हैं एक ग्लूकोज से कितनी एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस वी आर गेटिंग 6 or 8 एटीपी. From glycolysis we are also getting 2 molecules of pyruvate from one glucose molecule. From one glucose molecule, sorry, one pyruvate molecule, we are getting 15 ATP through the Krebs cycle and linkage step. And from 2 molecules of pyruvate, we will get 30 ATP plus 6 or 8 ATP, which we are getting from the ग्लाइकोलाइसिस। सो टोटल एनर्जी की बात करें तो 36 और 38 एटीपी एनर्जी अपने को वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिल सकती है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप एनर्जी बजट जनरेट कर सकते हैं, बट इसके लिए जरूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एटीपी जनरेशन की अगर अपन बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही रिएक्शन हो रही है, और वहीं माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के ऊपर आपको क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन मिल जाता है। तो ये जितने भी आपके NADH या FADH के फॉर्म में एनर्जी जनरेट हो रही है अंडर द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंडीशन, दे विल गिव देयर इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन उनको कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP. So this is all about the Krebs cycle. In our next video, we will discuss about the electron transportation chain. Thank you very much.